फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन वन मोर टाइम फिर से एक बार अरे आमा मारो अवाज नहीं आवे बराबर तो તમે ગયા ओके સાચી વાત so first of all a heartfelt thank you to every one of you to make this time and come here and special thanks to Jayesh bhai for actually making this possible. He was the person behind the first party. He is the person behind this party and I am definitely sure that he is the only one going to be behind every party. The reason being, हमारे यहाँ पे खुशबू मैम की जितनी पॉपुलैरिटी नहीं है उतनी जयेश भाई की पॉपुलैरिटी है. हमारे बनाए प्रोग्राम सफल नहीं होते उनके बनाए प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं. सो अभी अपने आप को ये मान के चलिए कि हम सब अभी पोलो फॉरेस्ट के लिए निकल चुके हैं. Talking about motivation, I always tell each one of you that please never give up on your worth, right? ये मैं हमेशा आपको कहती हूँ और मेरे तो बहुत सारे प्रवचन आपने ऑलरेडी क्लास में सुने होंगे. So ज़्यादा नहीं पकाऊंगी और ज़्यादा नहीं थकाऊंगी. But just a small little story. I don't know whether I might have shared it with you or not. There was a child and he asked his mother. अपने बच्चे ने अपनी मम्मा से पूछा that Mama, my friends tell me that I am just useless and this and that. Bully का कुछ problem था. What am I? I mean, like, what is my worth? The mother gave him a piece of stone. It was actually a very precious stone. It was maybe probably, let us keep it as a diamond stone. It was a piece of stone, and he said that you just go to different people and ask इसके बदले में आप मुझे क्या दोगे? किसी को देना मत, but just go and ask. So first he goes to a कबाड़ी वाला. And tells that इसके बदले आप मुझे क्या दोगे? तो उसने बोला होगा कि कुछ इसके बदले ज़्यादा तो you will not get anything. You might get 100 or 200 bucks or something like that. Then he asked another person who was a little bit learned, and he could identify it as something which you can keep it in his showroom. So he tells that okay, I can give you 10,000 rupees of money for this and that. Then again he reaches one more time to a jeweler, a person who is into jewelry. Shows that कि ये क्या है? He says that I can give you 1 lakh rupees for this. And then he goes to a person who is dealing into antiques and everything. And at that point of time, वो person कहता है कि ये जो stone है, it is very precious, so you might absolutely get maybe perhaps let us keep it 25 lakhs. The boy comes back again, tells his mother that मम्मा ये हुआ आज मेरे साथ. आपने मुझे 4 लोगों को कहा, किसी ने मुझे 100 रुपए बोला, किसी ने 1000 बोला, किसी ने 1 लाख बोला, किसी ने 25 लाख बोला. तो then the mother says that गलती उनकी नहीं है जो तुम्हारी वैल्यूएशन कर रहे हैं, गलती तुम्हारी है क्योंकि तुम गलत इंसान के पास वैल्यूएशन के लिए जा रहे हो. So always understand the only person who can value yourself is you. जब तक हम अपने आप को लाखों करोड़ों में नहीं गिनेंगे ना तो कोई नहीं गिनेगा. And never ever, even I have told this in our spoken English also कि अपने आप को तो कम कभी समझने का चाहिए. Right? Always keep your standards high, always keep your goals high and not at all कभी भी किसी को भी अपनी शाइन कम करने का मौका नहीं देना. If somebody is coming into your life जहाँ लग रहा है कि ओ ये प्रॉब्लम है, रेड फ्लैग, गेट आउट. चाहिए नहीं लोड, टेंशन वेंशन लेना ही नहीं है. ठीक है. सो इसी के साथ मेरा छोटा सा मोटिवेशन वाला खत्म होता है. ताली जाओ. थैंक यू सो मच. गाना तो अभी गाएंगे ना अभी हम लोग.